Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's video, we are going to do question making sentence formation. This is for class 6 essay 1. You know that essay 1 it is very important. Some people say half yearly examination, some people say half essay 1. So this is essay 1 class 6 exam preparation for half yearly. So 1, 2, 3 chapters, 4 chapters are coming. So we'll see one by one. In yesterday's video, we started the फर्स्ट वीडियो फर्स्ट रिवीजन क्लास कल हमारी हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हम करेंगे सेकंड क्लास, हमारी सेकंड क्लास है ये। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले आर्टिकल्स हम देखेंगे किस तरह से आप आर्टिकल्स लर्न कर सकते हो जर्मन में। तो ये चैप्टर जो आपका है das ist meine Familie, ठीक है। चैप्टर 2 है ये। मॉड्यूल 1 पूरा आपका essay 1 में आता है, ठीक है। मॉड्यूल 1 पूरा आएगा इसमें, और इसमें चैप्टर है टोटल 4 चैप्टर्स आपके टोटल हैं इसमें। तो हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। आर्टिकल्स इसमें जैसे कि ब्रूडर मीन्स ब्रदर, स्वेस्टर मीन्स सिस्टर, फाटर। बेसिक आर्टिकल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। दीज आर सम बेसिक आर्टिकल्स यू मस्ट नो। देन ओमा एंड ओपा, सो दिस इज फैमिली मेम्बर्स। एंड देन वी हैव अंकल, टांटे, ओके। एल्टन मीन्स पेरेंट्स, दिस इज प्लूरल। सो यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे हम। We write the article der Bruder, die Schwester, then der Vater, die Mutter, and here die Oma, then der Opa। ओपा को ग्रोसफाटर भी बोलते हैं, ओमा को ग्रोसमुटर भी बोलते हैं। अंकल, then die, and then die Tante, and then die Eltern। जो एल्टन है ये प्लूरल होता है, दिस इज प्लूरल, ओके। एल्टन इज ऑलवेज प्लूरल, सो कीप दिस इन माइंड। एल्टन इज ऑलवेज प्लूरल, so this you can retain in the mind, okay। This way you can improve the grammar skills and your articles. Now we'll come to the next. Now we'll see how to do this in a sentence formation. Like sentences, now we make some sentences. We'll frame some sentences. Like this is the brother of Tina. So das ist, here you will get blank. Das ist Bruder von Tina. So you have to write the article of here, article of brother. So the sentences में you have to write articles. So how will you fill up the articles? There are 3 articles: der, die, and das. So here this is the brother, das is der Bruder. Okay? This is sentence 1. Similarly, sentence 2, this is the sister. So das ist here Schwester. And you have to write the article of sister. This is the sister of Martin. So how will you do this? Sister of article is D, जो भी हमने पढ़ा था, you just see. तो D you will write a D. This is a type of sentences can come in the exam. Then we have how is we heist. मेरे पास सामने बुक है तो बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। अलग बुक है। We heist है uncle कौन? मिया के अंकल का नाम क्या? वी हाइस्ट डेयर अंकल, बिकॉज अंकल आर्टिकल इज डेयर, ओके। और यू कैन राइट सम मोर सेंटेंसेस। आई एम ich bin Freund, आई एम द फ्रेंड ऑफ हंस, मैं हंस का दोस्त हूँ। सो फ्रेंड आर्टिकल डेयर। So this type of questions can be asked. This is very important for revision class, okay. So now we move on to the next slide. This way you can practice your own, okay. You have to practice a lot, because without practice it will not make any sense. So you have to practice, okay. On daily basis you can do practice whatever you want, but you have to do practice. अब हम करेंगे next topic पे। तो we'll see some still from or some question making Frage builder. What do we say? Frage builder. Frage builder means question formation. You have to make questions like wie heißt du. You have to fill up the question word here. So this will be the blank. इस तरह से you will get blanks. Wie heißt du, then again wie alt bist du, how old are you. So this is the question formation. You will get blank here. So you have to write the answer. आपको blank में correct answer fill करना है, जैसे this question. So here comes who are you. So
वेयर बीज तू, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन वेयर हायराटेड मीन्स इज शी मैरिड, सो इज शी मैरिड, सो इसके लिए ईस्ट, ईस्ट इज वेयर हायराटेड। फिफ्थ क्वेश्चन, these are all questions. Like, do you have siblings? Geschwister. Geschwister means siblings. So, क्या आपके siblings हैं? क्या आपके brother sister है? So, hast du. So, this type of questions can be asked. Frage होता है। ये 1 इंच हो सकता है, 1 into 5. Like आपके 5 marks क्या सकते हैं आपके? 1 into 5. ठीक है? 5 marks की पूछ सकते हैं एग्जाम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पे फिल करने हैं, सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो आपको फिल करने हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर जो आता है, चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे। चैप्टर 4 है आपका वो वॉन्ट ईयर। तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले वर्ड है वोनन, वोनन वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोनन मीन्स टू लिव। ठीक है, इस वर्ड से रिलेटेड आपको कॉन्जुगेशन आनी चाहिए, लाइक वी ईयर and then here plan, here then in Delhi. So here you will write the correct answer. Then age in Pune, I live in Pune. So these are the answers that you have to fill up. Like Hans, conjugation of owner, Hans in Berlin, Hans lives in Berlin, Hans Berlin में रहता है। And then the Elton means parents, conjugation आपको आनी चाहिए इन दुबई। सो हियर यहाँ पे वियर ओनर करेक्ट आंसर, राइट करेक्ट आंसर इज सम अदर कलर। राकेश बोने, हंस वॉन्ट, हंस वॉन्ट, डी एल्टन वोनर, एल्टन प्लूरल होता है, प्लूरल वी राइट वोनर। दिस इज द अनदर पार्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेशन ऑफ वोनर। वोनर की कॉन्जुगेशन हमने यहाँ पे फिनिश किए, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट देयर आर द मैप ऑफ जर्मनी, लाइक सम सिटीज यू मस्ट नो दीज सिटीज, लाइक बर्लिन, वेयर इज बर्लिन, यू शुड बी इन्फॉर्म। बर्लिन, बैग कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में बैग, ठीक है। साल्जबुर्ग कहाँ पे, ये बुक में आपको दिया हुआ है, आप बुक से इसको कर सकते हो, ठीक है। हैम्बर्ग की जर्मनी में, हैम्बर्ग नॉर्थ में, नॉर्थ में हैम्बर्ग। स्टुटगार्ट भी आपको पता है, साउथ में स्टुटगार्ट। म्यूनशन, म्यूनशन, म्यूनशन आपको पता है, दीज आर ऑल, ठीक है, सिटीज, दीज आर ऑल सिटीज, सिटीज ये आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी सिटीज़ की, ये भी एग्जाम पूछ सकते हैं, ये आपको मैच करने के लिए आया है इस तरह से। फिर आपको और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है इसमें, जैसे कि आपको किसी पर्सन के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, तो स्ट्राइव टू जेड से, ये होता है आपको जेड से स्ट्राइव होता है, मतलब जंबल वर्ड्स होते हैं और आपको उसको अरेंज करना है जेड से स्ट्राइव, जेड से स्ट्राइव सेंटेंस बनाने के, जैसे कि फिश इन बर्लिन वोनन, इसको मैच करना। आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, जैसे इश वोने इन बर्लिन, जंबल वर्ड्स, मतलब जंबल वर्ड्स को आपको ज्वाइन करना है, ऐसे ही कोड लिखते हैं। हंस सेंटेंस बनाना इसका, तो हंस हार्ट डी ईमेल, हंस का ईमेल है, हंस हैज द ईमेल, हंस हार्ट डी ईमेल। तो इस तरह से आपको जेड से शायद सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इन दिस लाइव क्लास। आई होप यू लाइक इट। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।